So today we will continue with the same chapter, है ना, robotics. And in the robotics we have already discussed about the introductory part of the robotics. That means what would be considered as the robotics. So we have clear that the discussion regarding the terms robotics. Okay, so robotics is considered as a branch of engineering, right? That involves the what? Design, construction. Okay, you can say the operation, structure, disposition, manufacturing, and the applications of the robot. Okay, and the term robotics was first used by the Isaac Asimov. Okay, Isaac Asimov. So today we have to discuss the further about the applications of the robots. Humanoid robots we have actually discussing in the last session. Okay, so today we have to just figure out some another points regarding the humanoid robots. Clear? So we know that the humanoid robot is considered as the what? The robot which are the resembling to the human beings. Okay, that means जैसे कल यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ठीक है? Which robot? Humanoid robot. Humanoid robot. Okay. So humanoid robots are considered the robots which are resemble to the human beings. Okay, and actually these are the robots which look like the same appearance like a human beings. Okay, that means कि they are the bipedal in nature also. That means they can move to their legs. Okay, बिल्कुल human beings की तरह उनके पास भी 2 legs होते हैं. Fine, for the motion, for the movement. Okay, and 2 hands also there. ठीक, they can talk virtually, और वो बिल्कुल सामने से बैठ करके आपसे बात कर सकते हैं. एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ द ह्यूमनाइड रोबोट्स. ठीक है, इन इंडिया ऑल्सो एंड एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड द ह्यूमनाइड रोबोट इज एक्चुअली डेवलपिंग वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ देयर वेरियस एप्लीकेशंस एक्चुअली. ओके, दैट मीन्स कि इफ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमनाइड रोबोट्स, तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द AI प्लस रोबोट. ओके, robot with the AI, artificial intelligent. कुछ कमेंट है क्या बच्चों का? हाँ, so here is what? Robots with the artificial intelligence. Okay, or in the IT and what computers, we have already discussed that the 5G networks. Okay, the development of the 5G networks is actually giving the boost up in this case, and that means in the AI with or you can say the robots with the AI. Okay, and today we are also using some artificial intelligence type of the machines, like today we are using the AI enabled cell phones also. ठीक है, दैट मीन्स कि अभी सेल फोन लेने जाओगे आप ना, तो बहुत सारे ऐसे सेल फोन है उसमें लिखा रहता है AI कैमरा और AI सेल फोन. AI सेल फोन मीन्स व्हाट? जैसे सपोज करो कि दिस इज माय फोन. ओके, एंड माय फोन हैव अ कैपेबिलिटी, और यू कैन से एक इसमें फीचर्स है. माय फोन हैव अ फीचर्स, एक्चुअली कैपेबिलिटी मत बोलो, फीचर्स बोलो. ठीक है, कि जैसे अगर वो कहीं डार्क प्लेस में रखा है, क्लियर, एंड इफ यू आर एंड वो दिख नहीं रहा है, ठीक, तो उस कंडीशन में जब आप उसको ऐसे टच, मतलब ऐसे ऐसे ढूंढोगे ना, ऐसे हाथ करके, और जब हल्का सा उसमें हाथ टच होगा ना, तो इट जस्ट गिविंग द वाइब्रेशन, एंड विद द वाइब्रेशन द डिस्प्ले इज ऑन एक्चुअली. ठीक है, द डिस्प्ले लाइट इज ऑन. तो वो क्या है, एक तरीके का वो आपके सेंसेस ले लिया कि आप उसको सर्च कर रहे हो. ठीक, तो वो क्या हो जाता है कि जल जाता है. ओके, तो दिस इज द एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ दैट मोबाइल फोन. ओके, आप जैसे रात में आप क्या कर रहे हो, कैमरा लेकर के अपनी फोटो क्लिक कर रहे हो. ओके, सेल्फी ले रहे हो. सो इन दैट कंडीशन द फोन कैमरा हैज रिकॉग्नाइज दैट दिस इज द नाइट टाइम. ओके, so night time there is the lack of light, so the flash light should be on. Okay, तो क्या हो जाएगा कि अपने आप वो फ्लैश क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है. क्लियर? तो दिस इज द व्हाट? दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, उसको पता चल जाता है कि हाँ, दिस इज द टाइम ऑफ द नाइट, दिस इज द नाइट टाइम एंड दिस इज द डार्क टाइम एक्चुअली. ठीक है, तो क्या करेगा, लाइट को ऑन कर देगा. ओके, सो
like this, the when the humanoid robot will be developed with the artificial intelligence. तो बहुत सारे ऐसे इसमें पॉइंट्स ऐसे बताए जाते हैं, जैसे after the development of this is the avoiding the harmful situation to people, property and itself. That means कि if the humanoid robots, okay, have the tendency to avoid the what, avoid the harmful situations to the people. जैसे उसको पता चलेगा कि ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, क्लियर, अब उसको क्या करना है, पैम्पर करना है, राइट, उसको पैम्परिंग करना है, तो ही नो दैट कि दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ बेबी, ओके, दिस इज बेबी एंड देयर इज अ सोफिस्टिकेटेड हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक। तो इन दैट केस उसको ये चीज जानकारी है, तो बहुत आराम से उसको क्या करेगा, लिफ्ट करेगा, बहुत अच्छे से उसको पैम्परिंग करेगा, क्लियर। तो दिस इज कंसिडर्ड द व्हाट, दिस इज कंसिडर्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड व्हाट, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ओके। अच्छा, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लक्ष्मी रोबोट, ओके, लक्ष्मी रोबोट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द ह्यूमनॉइड रोबोट, ओके। एंड इन द कर्नाटका, इन द पता नहीं कौन से बैंक में, बैंक का नाम क्लियर नहीं हो रहा मुझे, एक्चुअली ही इज द बैंकिंग रोबोट एप्लीकेबल फॉर द बैंकिंग सर्विसेज, क्लियर। तो अब जब उसके पास जाओगे ना, तो हर एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देगा, आई मीन देगी, अब लक्ष्मी नाम रखा है तो मैं देगी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैंकिंग सर्विस बाई इज प्रोवाइडेड बाय द व्हाट, बाय द लक्ष्मी रोबोट, ओके। तो आप उसको उससे टॉक करोगे, ही इज जस्ट चैटिंग विद द पीपल, जस्ट कन्वर्सेशन विद द कस्टमर्स, ओके, एंड प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैंकिंग सर्विस। दैट मीन्स कि अगर आप उससे पूछोगे कि आई वॉन्ट टू मेंटेन आवर what our saving accounts and what is the conditions for maintaining our saving account, what is the minimum value requirement to maintain a saving account, so he will talk to you very frankly and वो आपको सारी चीज़ें बताएगा कि सर हाँ, this is the procedure and all, ठीक है। तो this is the what, this is the actually the benefits and the applications of the humanoid robot, clear, okay. Safe interacting with human beings and the environment, this is also a क्या बोल सकते हैं उसको, safe interacting safe interacting, okay, with human being, because you know that he, the in its opposite, the human is available, okay, the human is just above, just in front of the robot, so robot recognize that this is the human, so here is the safe interaction is done by the robots, okay. So these are the actually the points related to the applicability of the robots, okay. And what are the positive points regarding the humanoid robot, what are the actually negative points regarding the humanoid robot, क्या हो सकता है? If we are talking about the just negative points about the humanoid robot, then we find that the what, आप कह सकते हो, the issues related to the humanity, clear, the issues related to the humanity clear। तो उससे क्या होगा, ह्यूमैनिटी के ऊपर सबसे बड़ा इशू है रिलेटेड टू द ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ओके। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि फेसबुक हैव डेवलप्ड द 2 रोबोट्स, ठीक है, फॉर द सर्विसेज, ओके, but after some time they have developed their own language and they started the conversation with each other in their unknown language, okay. So US government have decided to what, to shut down that kind of robot and imposing a sanction on this type of robots and give the command to the what, command to the Facebook, ठीक है, to stop this working of this robot, clear। तो उस कंडीशन में क्या किया कि उसने फिर बंद कर दिया था, ठीक। अब सपोज करो कि ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट है, humanoid robot है, और when the in the humanoid robot if the emotions, okay, are developed, ठीक है, by themselves, ठीक है, by themselves, a new emotion is developed, so in that condition what should happen, उसको अगर पता चलेगा, ठीक है, कि परिवार क्या होता है, what is the family, okay, what is the pain, okay, what is the sorrow, ठीक, what is the laughing, एंड ये सब सारी चीज़ें उसके अंदर ऐसा अगर मान लो कि डेवलप हो जाता है, तो इट वुड बी अ व्हाट, इट वुड बी अ रिस्क
factor over the humanity. Clear? Chalo. So here is some examples about the what humanoid robot. जैसे the example is here, the Asimo robot. Asimo robot is the um, robot which is developed in the 2000, ठीक है, by the Honda Motors. Honda Motors. कहाँ की कंपनी है Honda Motors? This is a company of the Japan, MNC of Japan. Okay, so Asimo is the what? Japan robot. Okay, Atlas. Atlas is also a what? USA कंपनी है ये, सॉरी हाँ USA कंपनी है. दिस इज द नो एज द बोस्टन डायनेमिक. दिस इज द बोस्टन डायनेमिक. Clear? So Boston Dynamics is a USA company, and this robot is using for the disaster management. Disaster management. Clear? So next one is the Kirobo. Kirobo. This is the world first talking humanoid robot astronaut, and Japan sent to ISS in 2013. Okay, आप बोल सकते हो this is the world first talking humanoid robot astronaut. Humanoid robot astronaut. Okay, astronaut. Which one? Kirobo. And this is developed by the Japan. Okay, and by the year of the 2013, it's sent to the International Space Station ISS. Okay, so Kirobo is also example. अभी examples I have actually given the examples of the robot. ठीक है, not particular humanoid robot. Clear? Okay. So now we have to discuss about the applications of the robots. What kind of the applications and how the robots are applicable, and in which field robot is actually applicable. Okay. If we are talking about the uses and talking about the what versatility of the robots, okay, then we find that the robots are the very much applicable in the various sectors also. ठीक है, in the various sectors. The sectors like the health and medicine. मतलब पहले sectors हम इसमें लिखेंगे about the, ऐसे लिखना, applications of robots. Okay, applications of robots. Fine. The first one is in the health and medicine. In the health and okay. So in this field actually robotics has helped realize the dream of robotic surgery, which involves the use of the robotic surgical system. Okay, देखो इसमें होगा क्या कि we are using the robotic machines, we are using the robots for what purpose? For the purpose of the surgery. And in the countries like the US or European countries, okay, Australia and all, ठीक है, there are the several robotic surgeries has done. Okay, and especially surgery related to the like the eye surgery. Okay, so in this case the robots are actually using nowadays, okay, for the surgical purpose. So in the health and medicine sectors, the robotics has helped to realize the dream of robotic surgery. Okay, which involves the use of robotic surgical system and provided with a 3D vision system. One such robotic surgical system widely used is the Da Vinci system. Okay, so in the surgery, okay, in the surgery, the
system which is done by the robotic surgery. This is known as the Da Vina system. Okay, so the Da Vina system, okay, used for the abdominal surgery and even for ear, nose and throat surgery. ठीक है, used for the abdominal surgery, and even for nose, ear, throats, nose, ear, throat, nose, ear, throat surgery. Okay, surgery. Clear? So this is the Damina system carried out by the robotic machines. Also, you can say that by the robots. Okay. So another applications in the health and medicinal sector of the robots is that, suppose that there is a disposal of the waste material in the medical sector. Okay, so there is the high chances of the contamination. Okay, so to avoiding the contamination, okay, by the disposal of the waste of the medical sector or waste of the hospitals, okay, we can use the robot. तो रोबोट इज अ मशीन. ओके, तो उसके अंदर कोई ब्लड तो बह नहीं रहा है. क्लियर? कि इफ द कंटामिनेशन इज अकर, सपोज दैट कि जैसे कोई वेस्ट डिस्पोजल लेके जा रहे हैं, निडिल है, निडिल को लेके जा रहे हैं प्रॉपर पॉलीथीन वगैरह में पैक करके. अब उसको हो सकता है कि ड्यूरिंग दिस हो सकता है कि वो निडिल क्या हो जाए, पिंच कर जाए. ठीक, तो थ्रू दिस, सपोज दैट द निडिल वॉज द इन्फेक्टेड, ओके, and infected by the some viruses like the hepatitis virus, hepatitis C virus, like the AIDS virus. Okay, so in that condition what should happen? The virus get enters into the blood of the human beings, so it is leading the what, it is leading the further infection in the human being, particular person. Okay, but if we are using the robots in such type of the operations, in such type of the cases, so what should happen? अब उसका तो पूरा मेटल का बना हुआ है. ठीक, उसको सुई चुभेगी नहीं. क्लियर? अभी वो सुई भी टूट जाएगी. ओके, so here is the, we can avoid the what, avoid the contamination by the biomedical contamination carried by the biomedical wastes. Okay, so we can use the robots for this type of the purposes. Okay, so यहाँ पे और भी है. Suppose that if we are go for the what, go for the sonography, or you can say the MRI, CT scan, okay, X-rays. Clear? Ultrasound, sonography. Okay, तो अच्छा, आजकल एक और भी चीज चल रहा है, like the proton therapy, okay. So what should happen for the operation, or you can say to operate this type of the instruments, okay, which are actually responsible for the emissions of the some harmful radiations, including the X-rays, alpha, beta, gamma rays. Okay, so these rays can create the any type of the mutations in the human body. Okay, अब ये समझो कि जो पैथोलॉजी लैब होती है, पैथ लैब होती है, ओके, inside the path lab the humans are working. So there is a chances of the what, chances of the radiations effect, okay, by the some X-rays, or you can say the UV rays also. ठीक, so in this type of the premises we can use the robots to avoid the threats related to the this kind of the rays emittive premises. Clear? तो उन सब चीज़ों में भी इनका हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द अच्छा, वन मोर थिंग इज हियर. यहाँ पे एक रोबोट का नाम दिया गया है. द रोबोट नेम इज
Hero Surge. The robot name is Hero Surge. What is the Hero Surge? Actually, this is a this Hero Surge is a what? This is a robotic surgical system. Robotic surgical system. Okay, and this Hero Surge was developed by the Deakin University, Australia and the Harvard University, USA. कौन कौन सी यूनिवर्सिटी? डेकिन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया, ओके, एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए. Clear? Deakin University, Australia, and the Harvard University, USA. And the actually this Hero Surge, okay, is applicable for the creating the differentiation between the normal tissue, okay, as well as the tumor tissue. Okay, so this is actually differentiate the normal tissue and tumor tissue. Okay, so what are the tumor tissue? That means the cells or the tissues which are responsible to creating the cancer, or you can say it is responsible to develop the cancer like symptoms. Okay, तो ये इन दोनों के बीच में क्या करता है? डिफ्रेंशिएट करता है नॉर्मल टिश्यू एंड द ट्यूमर टिश्यूज के बीच में. कौन? ये हमारा हीरो सर्ज रोबोट. ओके, रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम. तो अच्छा, और इसका ये एक तो डिफ्रेंशिएट करता है. ओके, आफ्टर दैट इट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग द एक्यूरेट रिमूवल ऑफ दिस. Accurate removal of tumor cells. ठीक है, so this is also done the removal of the what? Tumor tissue. Okay, and बहुत ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी, सेफ्टी और रिलायबिलिटी, ठीक है, ली जाती है. ओके, बाय दिस हीरो Surge. So Hero Surge is a robotic surgical system and developed by the Australia and the USA. The two universities are here, Deakin University and the Harvard University. Harvard सब जानते हो, Deakin भी सब जानते हो. These are the top listed university of the world. Okay, so they are actually jointly developed the Hero Surge. Okay, and Hero Surge is responsible for the differentiate the normal tissues and the tumor tissues, as well as after the recognition, or you can say after identifying the normal tissue and the tumor tissue, this is also responsible for the accurate removal of the tumor cell. Okay, accurate removal of the tumor cell. Clear? Okay. Some robotic surgeries have the following advantage. क्या हो सकता है इसका? रोबोटिक सर्जरी का फॉलोइंग कुछ एडवांटेज हो सकता है. व्हाट काइंड ऑफ द एडवांटेज इज कैरिड आउट बाय द रोबोटिक सर्जरी. ओके, जैसे सपोज करो सर्जरी अगर हो रही है, ओके, सो इन दैट केस व्हाट काइंड ऑफ द, अब जैसे द सिंपल फिजिशियंस आर यूजिंग देयर हैंड. ओके, अब किसी चीज को कट कर रहे हैं. क्लियर? तो ह्यूमन एरर इज अ वेरी नॉर्मल थिंग. ठीक है, अब वो होगा ही होगा ह्यूमन एरर. फाइन. तो सपोज करो कि इफ ही इज जस्ट मेकिंग अ व्हाट, क्या कट कोई में कट कर रहे हैं वो, ठीक. तो इन दैट केस इट मे बी वेरी मच पॉसिबल दैट देयर इज अ डैमेज ऑफ द some blood capillaries, some extra blood capillaries. Okay, or you can say the blood arteries also. So in that case there is a loss of bloods. Okay, so anemic condition can cause, ठीक है, in the human surgical operations. Okay, you can say the surgical operations which is carried out by the humans. Okay, but in the case of the robot, it is leading the
रिड्यूस द ब्लड लॉस। ब्लड लॉस, अच्छा एक चीज और आपने देखा होगा, अभी ना जैसे टू रिमूवल ऑफ द calculi from the different parts of the body or different organs of the body. Calculi means stones. Okay, अभी इतना कंफ्यूज मत हो, इट्स अ मेडिकल टर्म। सो स्टोन्स रिमूवल के लिए क्या है कि देयर इज अ टू प्रोसेस, ठीक है। द फर्स्ट वन इज दैट कि जैसे कोई आप ट्रेडिशनल वे में क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, ओके, दैट मीन्स द फिजिशियंस आर हियर, और वो क्या कर रहे हैं, वो कट करके कोई चीज़ निकाल रहे हैं, ठीक। तो उसमें एक बड़ा सा चीरा लगता है, आपके देसी लैंग्वेज में बड़ा सा एक चीरा लगता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, फिर सीचस लिगेचस यूज़ करके उसका क्या करते हैं हम लोग, सीविंग करते हैं, ठीक। उसके बाद फिर वो निशान बना रहता है, इतना दूर सा निशान बड़ा सा बना रहता है, फाइन। बट इफ यू आर जस्ट लुकिंग टुवर्ड्स द व्हाट, द क्या बोलते हैं उसको, लेजर ऑपरेशन, और यू कैन द ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द लेजर टेक्निक, तो इन दैट केट व्हाट शुड हैपन, एक बहुत छोटा सा सुराख किया जाता है बस केवल, ओके। एक सुराख करेंगे बस, उसी से क्या करेंगे, वो लेजर जो है, लेजर इज ऑल्सो व्हाट इट्स अ रोबोटिक मशीन, तो उसको जा करके क्या करेगा, आराम से सारे कैलकुलाई को जो स्टोन्स होंगे उनको कट करके फिर बाहर निकाल देगा, क्लियर। तो देर इज अ चांसेस ऑफ द व्हाट, रिड्यूस द ब्लड लॉस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होगा। सो एनीमिक कंडीशन वी कैन अवॉइड द एनीमिक कंडीशन ड्यूरिंग द सर्जिकल ऑपरेशंस, क्लियर। अब वो सर्जिकल ऑपरेशन से स्ट्राइक वाली बात मत करना यार, यहाँ पे मेडिकल की बात हो रही है, ठीक है, नहीं तो क्या तो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, फाइन, ओके। तो हाँ, स्मॉल इंसीजन, देखो हमने वही बात किया, ऑल्सो द एडवांटेज इज द व्हाट, स्मॉल इंसीजन, ठीक, बहुत ज़्यादा बड़ा घाव नहीं बनेगा, ठीक, बहुत ज़्यादा कट नहीं लगाना है हमने, राइट। एंड द रिड्यूस द पेन्स एंड द शॉर्टनेस रिकवरी टाइम, ठीक है। अब घाव बड़ा नहीं होगा तो पेन भी कम होगा, रिड्यूस द पेन एंड एंड शॉर्ट टर्म रिकवरी, शॉर्ट टर्म रिकवरी, ओके। छोटा घाव जल्दी भरेगा, ठीक है, जल्दी वो हील होगा। एंड द इफ द वुंड इज व्हाट, वुंड इज मेजर और बिगर, देन इट टेक्स टाइम, ओके, द हीलिंग इज टेक टाइम्स, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन शॉर्ट टर्म रिकवरी इज हैपन, क्लियर, ओके। नेक्स्ट एडवांटेज बाय द रोबोटिक सर्जिकल स्ट्राइक्स, सॉरी सर्जिकल स्ट्राइक्स मैं भी बोल दिया, रोबोटिक सर्जिकल ऑपरेशंस इज दैट द व्हाट, द रिड्यूस पेन मेडिकेशन नीडेड। अब देखो, अब रिड्यूस पेन, सो दैट रिड्यूस द पेनकिलर यूजेस, ओके। दैट मीन्स यहाँ पे पेनकिलर, अब पेन होगा नहीं तो पेनकिलर का यूज कम होगा, तो व्हाट शुड हैपन, most of the painkillers, especially the painkillers which are categorized under the NSAIDs, what are the NSAIDs, लिखने की जरूरत नहीं है, केवल सुन लो, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ओके। so the medications in under this category are considered as the NSAIDs. These are the non-steroidal in natures, and examples are, there are several examples like the what, like the paracetamol, like the diclofenac, like the nimesulide, okay, like acyclofenac, okay। तो ये सब क्या है, these are the NSAIDs, okay, ibuprofen also, ठीक है। तो these are the painkiller, these are the non steroidal painkiller, fine। तो this is very useful painkillers, ठीक है, but these the adverse effect of this kind of the drugs are very bad actually, okay। most of the drugs including like the diclofenac, or you can say the some another drugs, is directly harming the what, harming the liver, ठीक है, harming the liver, तो liver के फंक्शन को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। so here the reduce the use of the painkillers, okay। so the future complications, the chances of the future complications is going to also get reduced, clear, okay। the next is the duration of hospital stay and the hospitalization time is drastically reduced, obvious सी बात है, healing is fast, that means the few days is here to stay in the hospital, ठीक है। तो reducing the duration of hospital stay, reducing
duration of hospital stays, hospital stay, okay, and you can say, or hospitalization, hospitalization time is reduced. Clear? छोटा घाव, ठीक है, less time for the healing, that means कि less stay in the hospitals, so hospitalization time is get reduced. Okay. Reduce post surgery complications, huh? It also reduces the post surgery complications. What are the post surgery complications? Like जैसे एक्सीडेंट हुआ, देयर वाज अ मेजर एक्सीडेंट, दैट मीन्स सेवरल मल्टीपल फ्रैक्चर्स हकर्स, ओके, इन अ सिंगल बोन, बहुत सारा फ्रैक्चर, ठीक, इन दैट केस द मेजर ऑपरेशंस इज डन, ठीक है. इन दैट केस आफ्टर द सम टाइम्स, ठीक है, आफ्टर द हीलिंग देयर आर द सम कॉम्प्लिकेशंस इज अकर्स, ठीक है, and these complications are considered the post surgery complications. The complications like the formation of the pus, formation of the pus at the what, at the site of wound, ठीक, तो pus का formation होने लगे, ठीक. So to avoiding this kind of the harness situation, we can go through the what, go through the robotic surgery. Okay, so this is the what, this is the application. And so apart from this there are several applications in the medical field also, ठीक है. Actually if you are just talking about the medical application, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि if you are just talking about the nano robots, ठीक है, so here is nano robots, that means we are using the both the technology, nanotechnology as well as the robotics, okay, and the nano robots is being developed, okay, and what are the functions of the nano robots. ऐसे सोचो आप, जैसे जो बहुत छोटे छोटे रोबोट्स होंगे, ठीक है, ऐसा मैंने ऐसे बना दिया, सपोज दैट ऐसे कुछ ऐसे ऐसे रोबोट्स होंगे, क्लियर, एंड दीज रोबोट्स आर हियर फॉर द व्हाट, फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाट, ड्रग डिलीवरी, ड्रग, सॉरी, ड्रग डिलीवरी, ओके. So suppose the drug is very hard in nature, example like chemotherapy, okay, and when we are just taking the chemotherapy or the chemotherapy is just given to the patient, okay, the several adverse effect may be rises, ठीक, like the loss of the hairs, ठीक, weakness, lethargic, okay, so these are the conditions, or you can say the adverse effect carried out by the chemotherapy drugs, okay. So in that condition, if we are using the nano robots, nano robot, these nano robots are also called the nanomeds, nanomeds, okay. So these nanomeds are responsible for the what, drug delivery, drug delivery at a specific targeted site, ओके. तो इन दिस कंडीशन, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, आराम से ड्रग को लेकर के जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, दे आर द नैनो इन साइज, ओके, नैनो इन साइज, एंड द सेल्स आर द माइक्रोन इन साइज, ओके. माइक्रोन इज द लार्जर यूनिट देन द नैनो. कैसे? नैनो पे वन नैनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 10 to power minus 9 मीटर, and the 1 micrometer is equal to 10 to power minus 6. So which one is the smaller? The nano is smaller, okay. So a nano sized robot which are responsible for the drug delivery can easily penetrate the what, easily penetrate the tissues and reach to the at the particular cells, okay. So this kind of the robots are is being used in the therapy of the cancer, okay, or you can say the treatment of the cancer. They actually carry the active chemical constituents of the medicines and delivered at the targeted site, specific targeted site. Easily it can penetrate, they can penetrate into the cells, ठीक है, क्योंकि these are smaller in the size than cell, okay. तो वहां पहुंच के आराम से ड्रग डिलीवर्ड कर देंगे, फाइन.
Okay. So now the next applications of the इनको क्या बोलते हैं, नैनोमेट्स. ओके, द नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ द रोबोट्स in the industry. The applications of the robots in the industry is not hide to the, क्या बोल सकते हो, to the world. Okay, in industry छिपा नहीं है ये किसी से कि what are the applications of the robots in the industry. Okay, so there is a various applications in the industry, and industries like the motor vehicle industry, like the electronic industries, okay, like the packaging industry, okay, or for the means of the transport, for lifting the what, lifting the heavyweight container, okay, for performing any task in a very what, in a very accelerating manner, okay. So there is the various kind of the applications are available, okay. You can say the various kind of the applications we have discussed, okay, under the industrial application of the robot, okay. So for the speed and the accuracy in automobiles industry, industrial robots are widely used actually, okay. In the industry we are using the industrial robot, okay. And this industrial robot is using for the purpose of what, for the purpose of speed and accuracy, okay, speed and accuracy. If we have just putting the what, putting the value of the क्या आप बोल सकते हो, gap value of the some any units, ठीक है, in between what, in between some specific objects, okay. We are just giving the what, input to the robots, and robots read out. So the robot would perform the task at accurate parameter, okay. So accuracies get increased. ह्यूमन में क्या होता है कि ह्यूमन एरर होने के चांसेस है. उनको बताया गया कि 10-10 मीटर पे कोई चीज आपको प्लेस करना है, ठीक है. 10 मीटर्स का उनको एक ग्राफ दिया गया, मतलब एक आइडिया दिया गया कि आफ्टर 10 मीटर्स यू हैव टू प्लेस दिस थिंग्स एट दिस प्लेस, ओके. बट ह्यूमन, देयर इज अ चांसेस, देयर इज अ ग्रेटर चांसेस ऑफ द ह्यूमन एरर. तो उसमें क्या होगा, ह्यूमन एरर होने के चांसेस है. कोई 10 मीटर तो 9.95 मीटर है, तो 0.5 मीटर का जो अभी वहां पे गैप आया, वो क्या है, दिस इज द ह्यूमन एरर. बट so we can say that the accuracy is actually get disturbed in the case of the human being, okay, the task performed by the human. But in case of the robotics, this is carried out by carried out in a very accurate manner. So there is the high chances of the accuracy, okay, high chance accuracy as well as the high speed is also here, okay. So reducing the cost, reducing the time, and increasing the speed and the accuracy of the what, of the particular task, okay, we can use the industrial robot in the industries, okay. So they can also perform the same task like the not same, they can also perform some task like the painting, welding, material handling and assembling, okay. Painting, welding, material handling and assembling, okay. So these are the tasks, various tasks which are performed by the, which can perform by the robots in the industries. आप में से बहुत सारे लोगों ने ना वो मूवी देखी होगी आयरन मैन, ठीक है, या आपने देखा होगा मैन ऑफ स्टील. मैन ऑफ स्टील देखना, मूवी अच्छी है ये, मैन ऑफ स्टील. ह्यूग जैकमैन इज द एक्टर ऑफ दिस मूवी, ओके. तो देखना इसमें, ठीक है, द यूज ऑफ द रोबोट्स. बहुत सारी मूवीज हैं, ओके. सो in the Iron Man movie, na, you have observed that there was the robots
and the robot's name was the what? Jarvis. Actually, Jarvis was a software. Okay, software with the AI enabled. AI enabled. Okay, and the several types of the robots are actually performed in the lab of the Iron Man. ठीक है, by the command of this Jarvis. तो Jarvis उनको command करके सारी चीज़ें बताता था वो application and they can perform the task. Okay, उससे perform कर सकते थे वो और करते थे. Fine. So there are the several आप कह सकते हो the task which can also perform by the robots like the painting. इन द कार इंडस्ट्री. मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल आपको देते हुए चलता हूं. इन द कार इंडस्ट्री मैक्सिमम कंपनीज ऑफ द ऑटोमोबाइल्स nowadays they are using the robots for this kind of the purpose, this kind of the task. रोबोट लगा हुआ है, जैसे ही उनके पास वो डोर आया उन्होंने तुरंत ऐसे तुरंत उसको स्प्रे करके तुरंत तुरंत क्या कर दिया, उसका पेंट कर दिया. ओके, तो बहुत तेजी से पेंट किया. अभी ह्यूमन करता उसको तो कैसे करता, पहले ब्रश लेता, फिर पेंट लगाता, फिर वो कोशिश करता, ध्यान रखता कहीं ऐसा तो नहीं पेंट बाहर गिर जाए. ठीक, तो क्या है ये, दिस इज एक्चुअली रिड्यूसिंग द टाइम. ओके, रिड्यूसिंग द टाइम एंड इंक्रीजिंग द व्हाट, एक्यूरेसी एंड द स्पीड. ठीक है, ओके. नेक्स्ट लाइक द वेल्डिंग. वेल्डिंग काम क्या होता है, कोई भी मेटल जैसे उसको क्या करना है, जोड़ना है. ठीक है, तो वेल्डिंग कैन ऑल्सो परफॉर्म बाय द मटेरियल हैंडलिंग. ऑब्वियस सी बात है कि मटेरियल हैंडलिंग इज ऑल्सो डन बाय द रोबोट्स. ओके, हमने उसमें बात भी किया था कि देयर वाज द वर्ड टू टाइप्स ऑफ द एक्चुएटर्स लाइक द हाइड्रोलिक एंड द इलेक्ट्रिक. ओके, in the electric actuator we have discussed if we need the high speed and the what, light weight lifting. Okay, so in that condition we are using the what, electric actuator. And in the case of when we need the what, high weight and the speed is low, then we will use the hydraulic. Okay, hydraulic pressure आप समझ रहे हो ना, hydraulic pressure. Okay, चलो. So they can perform this kind of the task. ठीक है, what are the use in the electronics industry? इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में क्या इसका यूज हो सकता है रोबोट्स का? बहुत यूज हो सकता है. क्लियर, इन इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, so in the electronic industry the robots like the Scala. There is a robot Scala. Okay, so robots like Scala manipulates Scala manipulators. ये एक तरीके का क्या है, this is the manipulator. Okay, so Scala like Scala manipulators are used for the mass production of the printed circuit board. Okay, printed circuit board, they help to place tiny electronic components on the PCB. Okay, so these Scala types of the manipulators are using the development of the what, PCB. PCB, this is the printed circuit board. Okay, देखा कभी सर्किट बोर्ड? सर्किट बोर्ड, when we just observing the circuit board, we find that there are also several teeny components are there. छोटे छोटे ऐसे, बहुत छोटे छोटे से ना ऐसे लगे रहते हैं, इंक्लूडिंग द डायोड एंड ट्रायोड. ऐसे ठीक है, ऐसे समथिंग लाइक. So this is Scala manipulators which is using for the development of the what, for the development of the printed circuit board, and it can use to place the tiny components ठीक है, tiny components
ऑन टू ऑन टू पीसीबी, ठीक है, ऑन टू पीसीबी, दिस इज अ प्रिंटेड सर्किट board. Clear? So in the electronics, this can be used, the robots can be used. And what is the use in the packaging industry? Okay, in the packaging industry. Packaging समझते हो, right? Today we are just actually consuming the several types of the products, ठीक है, some products of what, some food products also, and they are well packed, and a tetra packing is done, okay, of the, including the some juices, milk, okay, some another liquid. Clear? So tetra packing is here. So in the, actually in the packing industry, in the packing industry, ठीक है, so this is used for the packing and the pallet, palletizing of the manufacturing goods, okay. A robotic palletizer can quickly and efficiently stack these boxes within a pallet, okay. एक्चुअली होता क्या है, जैसे उसमें मटेरियल्स होता है ना, तो टेट्रा पैक देखा कभी ना, अगर आप उसको ओपन करते हो, ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट, आप ये देखोगे कि टेट्रा पैक पहले नॉर्मल एक मटेरियल था, ठीक, फिर उसको फोल्ड करके किसी तरीके से वो सब करके टेट्रा पैक बनाया गया, फाइन. तो दिस काइंड ऑफ द व्हाट टास्क इज डन बाय द रोबोट्स एक्चुअली, ठीक है. फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, means of transport. Clear? So mobile robots acting as the automated guided vehicle. ठीक है, this is the automated guided vehicle. ठीक है, automated guided vehicle with scanning laser to guide their paths and can be used to transport the goods in the large facilities like the ports, warehouse, ठीक है, large hospital, etc. Okay. तो इसमें होता क्या है कि जैसे ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, ठीक, दैट मीन्स इन दी vehicles the robots are there and which have the tendency for the automatically guiding, okay. So it just what, it just scan the what, scan the barcode or any code by the laser, ठीक है. तो लेज़र से वो क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे, उसके बाद देयर लेज़र एंड टू गाइड देयर पाथ, और वो इन्फॉर्मेशन देंगे कि हाँ कहाँ पर हमें इसको लेकर के चलना है. क्लियर? तो इट कैन बी यूज टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स इन द लार्ज फैसिलिटीज़, ओके, लाइक द पोर्ट्स, ठीक है, जो पोर्ट्स वगैरह पे, या वेयर हाउसेस के अंदर, जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं वहाँ पे भी जो व्हीकल्स होते हैं ना, वो जस्ट स्कैन करके उसको लेके चले जाते हैं कि कहाँ पे इसको लेकर जाना है. क्लियर? और उस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस में, उस पर्टिकुलर कंटेनर में उसको ले जा करके प्लेस करते हैं, ठीक है. एंड इन द लार्ज हॉस्पिटल एज वेल, ठीक है, तो हॉस्पिटल्स में भी कहाँ कौन सी दवा डिलीवर करनी है, किस वार्ड नंबर में कितने में करना है, इट विल बी डन बाय द रोबोट्स, ओके. द नेक्स्ट इज द मिलिट्री एप्लीकेशंस ऑफ द रोबोट. मिलिट्री एप्लीकेशन एक्चुअली ऐसा है कि
अभी इंडिया ने क्या किया था, सर्जिकल, कुछ साल पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया था रिसेंटली, ठीक है, इन द पीओके, ठीक है। तो हमारे मिलिट्री पर्सनल क्या किए थे, वी दे हैव जस्ट क्रॉस द बॉर्डर लाइन, ओके, एंड रीच्ड इनटू द एनिमी टेरिटरी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट दे डिस्ट्रॉयड ऑल। उनकी कैपेबिलिटी थी कि नो बडी, ठीक है, कुड कैच देम, ठीक है, कोई उन्हें पकड़ नहीं सका। बट इन द केस ऑफ द वॉर, ओके, बहुत सारे मतलब आर्मी पर्सनल जो होते हैं वो बुलेट शॉट किए जाते हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है। तो इन दैट काइंड ऑफ द ऑपरेशन, इफ वी आर जस्ट डेवलपिंग द रोबोट्स, ओके, you can say humanoid robot especially, so we can create the robotic army, okay. So there is some examples of the robots like the tele robots. So tele robots in the form of the unmanned armed vehicles, ठीक है, ठीक है, और unmanned tele robots, okay, like the UAV, in the UAV, the unmanned armed vehicles. This UAV is also called the drones. Drones. Okay. So unmanned air vehicles, or you can say the unmanned armed vehicles. Okay. So can either into far places or inaccessible areas to collect the sensitive data of an enemy territory without endangering those who are controlling them from outside. This can even fire on targets. देखो, in the defense, ठीक है, technology, we have discussed about the UAVs, ठीक है, UAVs, that means unmanned air vehicles, also considered the unmanned armed vehicles, okay. Why they are considered the armed vehicle? Because they have tendency for the fire, ठीक है, they have tendency for the fire, okay. ये किसी पे भी फायर भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड वाई दिस द एयर व्हीकल, कंसिडरिंग दैट दिस इज एक्चुअली व्हाट, फ्लाइट, टेकिंग फ्लाइट इन द एयर, ठीक, एंड it can easily reach at those types of the places which geographical conditions is very complicated, okay. तो हम ये कह सकते हैं कि इट कैन इंटर्स इनटू फार प्लेसेस, ठीक है, और इन एक्सेसिबल एरिया, ठीक, द रेयर एरियाज विच आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर, ठीक है, वी हैव देयर जियोग्राफिकल टेरन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. So in that kind of the area, there is no possibility to reach the human personnel, yeah, human beings. So okay, so in this kind of the area, the drones, or you can say the unmanned air vehicles, can access the particular region. Clear? Okay. So this is considered the tele robots. This UAV is also considered tele robots. Why this is the tele robots? Because this is providing the information regarding the enemy territory. ठीक, जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं ना, ठीक, तो वो एक कंट्रोल यूनिट में बैठे हैं, ठीक है, दे आर एक्चुअली ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर, and the information which is gathering, which is actually what, observing by the UAVs or the tele robots, ठीक है, is sent to the control center, ठीक है. So they can what, they can collect the data, ठीक है, which is provided by the tele robot, okay. Next one is the, here is the example of the robots like the Daksh robot. Which one? Daksh.
Daksh robot. So Daksh robot is a counter-terrorist remotely operated vehicle. ठीक है? Developed by the DRDO. This is the remotely operated vehicle, ROV. ठीक है? And this is actually developed by the DRDO, the Daksh, which is also considered as the counter terrorist robot. Counter terrorist. ROV stand for the remotely operated vehicle. Clear? Okay. So recently DRDO has started a project to integrate artificial intelligence, ठीक है, at artificial intelligence at a robot to deploy at LOC to be used in the warfare. देखो अभी actually the DRDO has started a project, ठीक है, started a project, ठीक, by DRDO. For what purpose? To develop a robot army with AI, with AI artificial intelligence, ठीक है, to deploy at LOC, line of control. Okay. तो आप ये सोच सकते हो कि if the robotic, or you can say the robot army is deployed at the LOC, so in that case what should happen? There is the less chances of the less chances of the what, डेथ ऑफ द आर्मी पर्सनल. ठीक है. तो अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि दिस army, or you can say this robot army, is enabled with the artificial intelligence. Why the need of the artificial intelligence is here? क्योंकि in this case, ठीक है, in this case, in the robot army case, this is very important to identify, or you can say to differentiate between the enemy personnel and our own military personnel. ठीक है. तो इसमें क्या है कि उसके अंदर एक एआई होना चाहिए ऐसा डेवलप जो कि दोनों को क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके. अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि अगर किसी ने सपोज करो कि कोई ब्लास्ट होता है, ठीक, इस साइड में, तो ही शुड कैपेबल टू डिफ्रेंशिएट द व्हाट अबाउट द सीज फायर वायलेशन. ओके. तो अभी सीज फायर वायलेशन के लिए अगर वो नहीं है, कैपेबल नहीं है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, तो सपोज करो कि कोई आर्मी पर्सनल जो है वो अगर प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक, टारगेट हिट करने की बाय द गन्स, एंड ही इज़ यूजिंग द व्हाट गन लाइक द AK-47 और LMG SMG जो भी है, तो उसने धड़ 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 करके उसने गोली शॉट किया. ठीक है. सो अब वो उसको रोबोट को लगेगा कि हमारे ऊपर अटैक हो गया है. ठीक. तो वो क्या करेगा कि वो भी फायर स्टार्ट कर देगा. ठीक है. बट इफ द रोबोट इज द आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, ओके, so in that condition what should happen? He identified that he is not a enemy attack. Actually, our friend, or you can say our army personnel is doing practice. ठीक है. तो AI is very important. ठीक है. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. The next one is the disaster management. ठीक. Disaster management. The applications of the robots in the disaster management.
disaster management. Okay. So the soft autonomous robot in the form of snake robots can be used to trace people trapped in the debris of collapsed building during the earthquake. Acha. How the robots are useful in the disaster management? Okay, when the building is collapsed, any building is collapsed. Okay, so what should happen? Collapse. The large amount of debris, large amount of the debris, ठीक है, is formed. Debris क्या? कूड़ा ना, मलबा जो होता है जब बिल्डिंग गिरती है तो जो भी मलबा होता है, this is considered the debris. Okay, so large amount of the debris is formed, and the chances of what? Chances of trapping of human lives, human lives, ठीक. दैट मीन्स कि उसके नीचे बहुत सारे क्या हो सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ फंसे हों, ठीक है. सो इन दैट केट व्हाट, हाउ द रोबोट इज एक्चुअली यूजफुल. A snake-like structure, the snake-like robot is developed. Snake-like robot is developed. Okay. और ये बिल्कुल स्नेक के जैसे ही क्या करता है, चलता है. सो स्नेक जैसे होता है ना, छोटी सी जगह में आराम से क्या हो जाता है, चला जाता है, ठीक, अंदर चला जाता है. तो इन दिस केस द स्नेक लाइक रोबोट इज एंटर्ड इनटू द डेब्रिस. अब वो अंदर घुस करके शेयरिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द personnel trapped into the debris. Okay, building debris. So this soft autonomous robot in the form of snake robots can be used to trace the people trapped in the debris of collapsed building during the earthquake. Okay, it also involves the role of Atlas robot developed by USA for the disaster management, that is for the rescue and the rehabilitation. ठीक है. यहाँ पे जो एटलस है, द एटलस रोबोट इज एक्चुअली डेवलप्ड बाय द यूएस. ठीक है. और यूएस के द्वारा ये जो एटलस डेवलप किया गया, व्हाट आर द पर्पज ऑफ दिस एटलस रोबोट? एक्चुअली द एटलस रोबोट इज यूजिंग फॉर द क्या बोल सकते हैं उसको, using for the rescue and the rehabilitation like the task. Okay, तो अभी अगर हम बात करें तो कब इसको पब्लिकली अनवील्ड कब किया गया था एटलस? थोड़ा सा एटलस के बारे में आप समझते हुए चलो, ठीक है. लाइक द so this atlas is actually unveiled publicly in 2013. So in the year of 2013. Okay, and this is a bipedal humanoid robots. Bipedal humanoid robot. ओके, इसके दो पैर हैं, ठीक है. एंड दिस इज अ ह्यूमनाइड रोबोट. क्लियर? जैसे अगर बात करें तो ऐसे कुछ, ये ऐसे यहाँ पे ऐसे हेड पार्ट होगा, ठीक. एंड इट कैन ठीक है, बाईपीडल, बाईपीडल, ठीक है. और यहाँ पे इसके ये भी होंगे, हाथ भी होंगे, ठीक. तो दिस इज द काइंड ऑफ ह्यूमनाइड रोबोट्स.
Okay. And Boston Dynamics, ठीक है, Boston Dynamics is a US company, ठीक है, American robotics company is the Boston Dynamics, have actually developed the designed this robot. Okay. And इसका मेन यूज यही था, the it is intended to aid the emergency services in the search and the rescue operations. Okay. And the performing the tasks such as the shutting of walls, opening doors, and operating powered equipments इन इन्वायरमेंट वेयर ह्यूमन कुड नॉट सर्वाइव. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी जा करके ये परफॉर्म कर सकता है टास्क वेयर द ह्यूमन कुड नॉट ह्यूमंस कुड नॉट सर्वाइव. ठीक है, सपोज कि कोई ऐसे कहीं पे फायर लगी हुई है, आग लगी हुई है. ठीक है, एंड इन दैट कंडीशन सम पीपल्स आर व्हाट, सम पीपल्स आर ट्रैप्ड inside a room or inside a building. Okay, so in this case this Atlas robot is very applicable, very useful. This Atlas is actually enters in the burning building. ठीक है, and just performing the rescue operations. ठीक, and ये डोर को ओपन कर लेगा आराम से. क्या बोल सकता है कि अंदर जा करके उन लोगों को रेस्क्यू कर लेगा. ठीक है, तो this is about the Atlas robot. Clear? Next is like the can be used for the exploration of mines, providing the 3D mapping mines. Okay. क्या चल रहा था हमारा? Disaster management, right? So in the disaster management, the robots are also using for the mining purpose. ठीक है, also using for mining purpose. Okay, and we know that in the mining there is the chances of what, chances of emissions of the several poisonous gases also, poisonous gases. ठीक, अब पॉइजनस गैसेस है तो इस केस में क्या होगा कि बहुत सारा पॉइजन जो है वो निकलता है, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं. ठीक, तो ह्यूमन सर्वाइवल इज वेरी टफ इन द माइनिंग. ओके, सो हियर this robot can be used for the providing a for providing a 3D mapping, 3D mapping of the mines, अब ये माइंस का क्या करेगा, 3D मैप प्रोवाइड कराएगा, तो थ्रू विच वी कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट हाउ द माइंस लुक्स लाइक, वो किस तरीके से और कहाँ पे कौन सा मेटल है. ठीक है, कहाँ पे कौन सा मेटल है या ओर्स है. तो दिस इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन. तो इट this kind of the operation is carried out by the using of the what, using of robots. Clear? Okay, the abandoned mines due to lack of the ventilation can have accumulation to the poisonous gas like the methane, which may lead to explosion and threat to human life. So such tasks can be performed by robotic system like the ground hog. ठीक है, so here is another robots. The robot's name is the ground hog. ठीक है, and this ground hog robot is also a US robot. क्या नाम है? ground hog by the USA. ठीक है, and the ground hog is actually using ground so this groundhog robot is actually using to detect the harmful gases present in an abandoned mines. ठीक है,
So this groundhog is using. Actually, the groundhog robot is a what? This is a four-wheeled robot. Four-wheeled robot. ठीक है. तो फोर व्हील्ड रोबोट इज दिस. आप देख सकते हो कि चार इसमें क्या होते हैं, फोर व्हील लगे होते हैं. क्लियर. एंड अगर इसको देखा जाए तो ये देखने में कैसे लगेगा. एक सेकंड मैम, क्रोम इज okay. So you can see this. This is the groundhog robots, and this is the Carnegie Mellon's groundhog, and what? An autonomous four-wheeled robot with a huge heavy duty. Okay, and it tires looks an unprecedented trip into the abandoned coal mine in the late May, and was able to create the accurate three-dimensional map. ठीक है. जैसे इसको हम ओपन करते हैं तो वी फाइंड द इमेजेस ऑफ दिस. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दिस केस ओके. So here this is the what? This is the groundhog. Okay. Like this. Okay. तो दिस आप ये बोल सकते हो कि व्हाट दिस इज द ग्राउंड हॉग रोबोट्स. आप देख सकते हो कि कितने इसमें चार पहिए हैं. ठीक है. एंड द टायर्स आर व्हाट वेरी व्हाट हाई ड्यूटी टायर्स. ठीक. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो इसमें. क्लियर. ओके. चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन. व्हेन द सोसाइटल एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट्स आर आल्सो हियर like the societal applications. Societal applications. Okay. That means how the robots are applicable in the society. Okay. So robots can be used to assist the sick and elderly in the form of person assistance and can even reduce the loneliness. ठीक है. loneliness. Okay. loneliness. ठीक. that means अभी अगर आप कोई ऐसा sick person है. Okay. sick person, or you can say the elderly person, and this is the word like the नॉट पेशेंट. पेशेंट कंसिडर मत करो, खाली पर्सन ही रहने दो. ठीक है. तो it is actually some robots are here which is actually using to what? To solve the problem of the, to tackle the problem of the what? Problem of the loneliness. Okay. Actually this is person assistance robot. Okay. और उसमें क्या है, ये लोनलीनेस को दूर करेगा. जैसे अगर आप बोलोगे तो डांस भी करेगा. क्लियर. बोलोगे तो आपके लिए कुछ गा के सुनाएगा, लाइक समथिंग, है ना. कुछ कहोगे तो हो सकता है खाना बना के भी ले आए, आपको खाना खाने के लिए भी दे. फाइन. तो दिस इज कंसिडर एज द व्हाट? कंसिडर एज द सोसाइटल टाइप्स ऑफ द रोबोट्स. ओके. तो हियर इज अ एग्जाम्पल. ठीक है. एग्जाम्पल इज द वाकामारू robots. Okay. Wakamaru robots. So Wakamaru robots is actually designed by the Japanese company. ठीक है. और सब लोग जानते हो Japanese कंपनी को. There is the Japanese company Mitsubishi. Which company? Mitsubishi.
ओके, है ना, मित्सुबिशी की कार भी आती थी, मित्सुबिशी लैंसर, मित्सुबिशी पजेरो, है ना, पजेरो है। तो मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी, हैवी ड्यूटी इंडस्ट्री, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज दो, हैवी इंडस्ट्रीज। So this is actually designed by the this Wakamaru robots is designed by the what Mitsubishi Industries. Okay, and this is the actually intended to perform the natural communication with the human beings. Okay, अभी बोलते हैं तो ऐसा कुछ येलो 3 फुट डोमेस्टिक रोबोट्स की तरह ये आपको देखने में लगेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, ठीक, क्या पुट करना है हमें, वी आर जस्ट पुटिंग द वाकामारू। हाँ, यस, दिस इज द काइंड ऑफ व्हाट दिस इज द वाकामारू रोबोट। ठीक, ठीक है, दिस इज द वाकामारू रोबोट। क्लियर, आप देख सकते हो। एंड यहाँ दिखा रहा है कि वाकामारू इज ग्रीटिंग द व्यूअर। फाइन, छोटा सा 3 फीट का कुछ ऐसा डॉल टाइप का, राइट। तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बोलते हैं कि यूएसडी प्राइस पॉइंट अगर इसका अगर देखा जाए यूएस डॉलर, तो इस नहीं, महंगा तो है, नॉर्मल तो नहीं ले सकते। इट्स 14,300 यूएस डॉलर टू 15,000 यूएस डॉलर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दिस इज रोबोट्स विच इज़ डेवलप्ड बाय द जापानीज इंडस्ट्री मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी। ओके, तो सम डोमेस्टिक रोबोट्स आर हियर लाइक द रूम्बा। ठीक है, विच रोबोट, लाइक द, देखते हैं, रूम्बा रोबोट। So Roomba can be used for the vacuum cleaning and the home cleaning and even the lower cleaning task. Okay, lawn cleaning task. Fine. तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे लिखा हुआ क्या, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, रूम्बा। अभी ऐसे इमेज में चलते हैं अपन, तो वी फाइंड दैट, देखो इसमें बहुत सारे रूम्बा अवेलेबल भी हैं, आप ऑर्डर भी कर सकते हो। क्रोमा, तो यूरेका फोप्स, रोबोवैक एंड माप। ठीक है, आई रोबोट, रूम्बा i3 रोबोट वैक्यूम। ओके, वैक्यूम क्लीनर समथिंग 29,900। ठीक, तो ऐसा ऐसा कुछ रूम्बा रोबोट देखने को मिलता है हमें। फाइन, एंड द पर्पज ऑफ दिस रूम्बा रोबोट्स इज व्हाट, फॉर द डोमेस्टिक पर्पज इज हियर। ठीक है, दिस इज वेरी यूजफुल इन द डोमेस्टिक टास्क लाइक दिस इज यूजफुल इन द व्हाट, कह सकते हो कि झाड़ू पोछा करने के लिए। ठीक है, the cleaning the what cleaning the lawn, cleaning the home. Okay, or you can say it is performing the vacuum cleaning actually. ठीक? So this is considered as a Roomba robots. Okay, some of here like the robots can also be useful like the scavengers to preserve the human dignity by eliminating the manual scavenging. Okay, स्कैवेंजर्स दैट मीन्स अगर किसी भी तरीके का उसमें इम्प्योरिटीज़ हुई, ठीक, तो वो क्या करेंगे, उसको किल कर देंगे। ठीक है, या आप कह दो कि कोई भी स्कैवेंजर्स लाइक क्या बोल सकते हैं, हाँ, स्कैवेंजर्स जो कि क्या करते हैं, जो कि किसी डेड मटेरियल्स को क्या करते हैं, ईट करते हैं। ओके, तो द रोबोट्स कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस स्कैवेंजिंग टास्क। ओके, so this type of robots are also considered as a domestic robots. Okay, so here is some environmental applications are also here. ठीक, these are the societal, some the environmental applications. Okay, so what kind of the environmental applications are here, like the some robots is being developed like oil jappers. Okay, what are the oil jappers? Oil jappers are actually considered as those आप कह सकते हैं organism or those devices
which is using to eat and digest the oil spills actually. Okay, so here in the oil japping, there are the many nano robots are here. Okay, nano robots are here. Okay, which can be used to clear the oil spills or the petroleum contaminated waters. Okay, so it can disassemble the pollutants almost non biodegradable ones. Okay, जैसे जो बहुत सारे ऐसे ऑयल्स होते हैं, the oils which are non biodegradable, non biodegradable. ठीक है, so this kind of the oil, you can say the oily spills, okay, can destroy or clear by the robot. Okay, अच्छा सपोज करो कि अगर ये क्या होंगे, बायोडिग्रेडेबल ऑयल्स होगा, तो व्हाट वी कैन डू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दैट बायोडिग्रेडेबल ऑयल्स. हमने उसमें पढ़ा था ना इन द बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, बाय द यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी the we have developed the species of the bacterias. Okay, and the species क्या था, हाइड्रो कार्बेनो क्लास्टिक बैक्टीरिया. ओके, हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया. दैट मीन्स कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको ये क्या करेगा, किल कर, सॉरी, डाइजेस्ट कर देता था. ठीक है, दिस काइंड ऑफ द बैक्टीरिया. बट इन केस ऑफ द व्हेन द आयल इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, वी कैन यूज द नैनो रोबोट्स. ठीक है, टू डिस्ट्रॉय द what oil spills. Okay, for the removal or for the cleaning of the oil spills. Okay, so it can disassemble the pollutants. Okay, robot can also be used for the safe handling and the disposal of the nuclear waste. ठीक है, why, how the robot is used for the safe handling? Because we know that the robots are the machine. Okay, so handling is done by the robot is very safe. Okay, that means it is not threatful for the human beings. Okay, तो अभी इसमें क्या है कि हम अपना रोबोट्स को यूज कर सकते हैं. ऑल राइट. ओके, हियर इज अ रोबोट, नेम इज द ईटर रोबोट. मैं ईटर पढ़ता हूँ, EATR. EATR. The EATR here is standing for the energetically autonomous tactically robot. Energetically autonomous tactically robot. Okay, so what is the use of this EATR? Actually, this is developed by the USA, designed by USA. Clear? So it can use the biomass of environment in the form of wood chip. Okay, in the form of wood chip and the grass clipping to produce its bioenergy, or even by using chicken fat to produce biodiesel. ठीक, देखो इसमें होता क्या है कि दिस इज एक्चुअली यूजिंग द बायोमास. ठीक है, लाइक द वुड चिप्स. जो वुड चिप्स क्या होते हैं, जैसे सपोज करो कि कोई लकड़ी है ना, तो आप देखते हो ना जैसे ट्रीज होते हैं, तो ट्रीज के सराउंडिंग में क्या होते हैं, पोपल्स होते हैं ना, पोपलें होती हैं, उनको ऐसे तोड़ो तो निकल के, दिस इज कंसिडर द वर्ड वुड चिप्स. ओके, so by using this kind of the biomasses like the wood chips, you can say the grass clippings also, that means सड़ी गली जो घास होती हैं. Clear? This is using this kind of the biomass for the production of the bioenergy. ठीक है, bioenergy. तो ये bioenergy जैसे like the some natural gases would also produced by the using this kind of the biomass. Okay, apart from this, by using the chicken fat, ठीक, this is actually
by using the chicken fat, this is actually yeah, capable to produce the biodiesel. ठीक है, to the chicken fat, this is producing the biodiesel. ठीक, तो बायोडीजल को भी क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, रोबोट्स. So 24/7 task for the forest exploration, border patrolling, surveillance, and the natural resource monitoring. Apart from this, it can also 24/7 task for the forest exploration. ठीक है, वो फॉरेस्ट में एक्सप्लोर करना, फॉरेस्ट एक्सप्लोर करना, एंड फॉर द बॉर्डर पेट्रोलिंग. ठीक है, फॉर द सर्विलांस एंड द natural resource monitoring. Okay, that means it is also providing the information regarding the natural resources. This is actually exploring the forest. Okay, तो forest explore कर रहा है, so the kind of the resources are available in the forest, so it is also providing the information regarding that. Okay, that means it is providing the information that at this particular region this kind of the resources are available. ठीक है, तो वो उन सब चीज़ के बारे में भी क्या करता है, जानकारी या इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराता है. क्लियर? ओके. The next, the applications of the robots in the space exploration. Space exploration. Okay, what should happen in space exploration? Actually, अभी हमने थोड़ी देर पहले था रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, ROV. ठीक है. So the remotely operated vehicles are actually autonomous robots. These are the autonomous robots. ठीक है, तो autonomous robots, or you can say the autonomous aircraft or spacecraft. Autonomous robotics aircraft or spacecraft, okay, in the form of the remotely operated vehicle. ठीक है, this is actually operate in the outer space in the form of orbiter, lander and the rover. ठीक, orbiter, lander and the rover. अभी in the year of the 2019, when we have launched the Chandrayaan-2. ठीक है, एंड इन द Chandrayaan-2 क्या क्या उसमें था, ऑर्बिटर, लैंडर एंड द रोवर. ठीक है, तो विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर. ओके, सो रोवर was there is considered as a robot. Okay, not only rover, the lander and the orbiter are also the a type of the robot. ठीक, so what are the use of the rover, lander and orbiter? And actually even today the orbiter of the Chandrayaan is providing us the images of the moon. Okay, what are the functions of the lander? तो मतलब देख रहे हो आप, इसका एप्लीकेशंस आप समझो रोबोट्स का. द रोवर इज एक्चुअली डिजाइंड फॉर द डिजाइन फॉर ट्रैवलिंग इन द surface of the moon. ठीक है, at the surface of the moon and providing the information regarding this. Okay, so we can say that the robotics are used in the development of the orbiter, lander and the rover. Okay, so for the outer space exploration, okay, so it can withstand the extremes of temperatures, variations and radiation requirements of the outer space. Okay, moreover the vicinity of the Venus and the Jupiters are too hostile for the survival. अभी मैं बोल रहे हैं कि जो मतलब Venus and Jupiters की कंडीशन है ना, बहुत ज़्यादा hostile है for the survival. So in that case we can launch the missions, but the missions would carry the robotics instrument, or you can say carry the
robots actually. ठीक है, for the exploration. Okay, so by this the applications of the robots in the space is very high. ठीक है, you can say very wide actually. ठीक. Okay, so the lander and the rover, both of them land on the extraterrestrial body. ठीक है, such that lander remains the fixed or stationary while rover is mobile. Robotic spacecraft with more flexibilities to collect the chemical composition of the rocks and the soil samples. Okay, that means in the robots like the rover, there are the uh, consistent नहीं कह सकते हो आप, assembling. Okay, they are the assembling of the several types of the sensors, okay, in the rover. So rover is mobile in nature. It can travel over the surface of the extracelestial body, okay, including like the some planets. Okay, and it is providing the informations regarding the resources, regarding the compositions of the celestial body सरफेस. ठीक है, तो उन सब के बारे में वो इंफॉर्मेशन वगैरह सब प्रोवाइड कराएगा. तो दस वी कैन से दैट देयर आर द सेवरल एप्लीकेशंस एंड अ वेरी वाइड रेंज ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द रोबोट्स. ठीक है, इन आवर लाइफ्स वी हैव डिस्कस दैट द applications of the robots in the medical field, applications of the robots in the industries, applications of the robots in the electronics, okay, in the motor industries, okay, so in the space exploration as well. ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे बात किया, ये कैसे कैसे क्या डेवलप हो गया. ठीक है, अभी कुछ रोबोट्स के बारे में अपन बात करते हुए चलेंगे, फिर उसके बाद इस चैप्टर को अपन फिनिश करेंगे. फाइन, चलो. The major heading would be the evolution in robotics. ठीक, हमने पहले पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ रोबोटिक्स. ठीक है, अब इवोल्यूशन इन रोबोटिक्स कि कैसे कैसे हुआ उसमें. राइट, चलो. इन द ईयर ऑफ 1926, ठीक है, there is a robot name is the televox. ठीक है, and this televox is the first working robot. ठीक है, and introduced by the Washington, USA. Okay, in the year of 1926 the televox, okay, televox was the first working robot. अच्छा, थोड़ा सा इसको ना अपन एक काम करते हुए चलेंगे कि शायद अगर हमें इसका इमेज मिले तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए. टेलीवॉक, हाँ, यू कैन से इन द ईयर ऑफ द 1926. ठीक है, द फर्स्ट रोबोट वॉज डेवलप्ड. ओके, एंड ये आप देख सकते हो, दिस इज द वॉट, दिस इज द टेलीवॉक्स. ये पहला टेलीवॉक्स था. ठीक, एंड विल्स रॉय जेम्स वेंसले टेलीवॉक्स came about in the 1927. He had invented and the patented an earlier supervisory control system, and the patent filed in the 1923. This system was effectively a system that could remotely control, okay, equipment via power lines, wireless telephone lines, but not sound. Okay, which is how it is differentiated with the latter televox. ठीक है, some articles give this earlier supervisory control system a start date of the 1924, a year later than the actual patent application. ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमें टेलीवॉक्स देखने को मिलता है. ओके, द फर्स्ट, इसको फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट भी बोलते हैं. ठीक है, इसको टेलीवॉक्स को. दिस इज द फर्स्ट वर्किंग एक्चुअली
Televox robot. Working Herbert Televox. Hmm. Herbert Televox. ठीक है. Built in the 1927. ठीक. And actually, in the 1926, this is the first introduced. Okay. And next, in the 1928, after 2 years, in the 1928. Clear? There is the next Gaku Tensoku. The robot name is the Gaku Tensoku. Okay. So Gaku Tensoku is developed by the Japan. ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा. Developed by the Japan. Okay. And in the year of the 1954, there is a robot name is the Unimate. Unimation से बना है ये. Okay, Unimation. And this is the first digital robot. The first digital robot. Okay. And this Unimate robot is actually designed by the Judge Devil. ठीक है. By George Devil. Okay. So in the year of the 1954, the Unimate. Okay. This is the first digital robot. Okay. Then in the year of 1956, there is the introduction of the artificial intelligence. ठीक है, artificial intelligence. Okay. And the artificial intelligence is introduced by the Marvin Minsky and John McCarthy. Marvin Minsky and John McCarthy. Okay. Actually, these both guys have introduced the what? Artificial intelligence. ठीक है, इन्होंने बताया कि क्या होता है artificial intelligence. The next is the in the 1973. By the year of 1973, there is a robot name is the Famulus. Okay, there is the name is the Famulus, and this is developed by a German industrial company. ठीक है, by a German industrial company, KUKA company. KUKA. Okay. So this Famulus is developed by the German industrial company KUKA, and this is the first reprogrammable, multifunctional and multidimensional robot. Okay, this is the first reprogrammable, multifunctional and multidimensional robot. Okay. So by the year of 1973, the first multidimensional robot name is the Famulus is introduced by the KUKA industry, German industry. Okay. After the 4 years, in the year of the 1997, the first
supercomputer is actually developed, which is known as the IBM Deep Blue. Okay, and this supercomputer is also is considered as a robot. ठीक है, क्यों? क्योंकि दिस इज अ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर. ठीक है, रीप्रोग्रामेबल कंप्यूटर. एंड इसके बारे में एक चीज़ IBM डीप ब्लू के बारे में ये चीज़ है कि व्हेन द इन द ईयर ऑफ द 1997, ओके, 1997, the IBM International Business Machine, okay, IBM Deep Blue, a supercomputer, okay, is introduced in the 1997. And at that time, ठीक है, there was a world chess champion, name was the Gary Kasparov. ठीक है, Gary Kasparov. ये क्या थे? वर्ल्ड चेस चैंपियन. ओके, एट दैट टाइम. ओके, so there is a match between the IBM Deep Blue versus Gary Kasparov. ठीक है, and what was the result is that this IBM Deep Blue supercomputer defeated to the world chess champion the Gary Kasparov. तो उनको क्या कर दिया था? ये हरा दिया था. ठीक है, तो ऐसा कुछ 1997 में IBM डीप ब्लू के साथ में मैच हुआ था. ओके, देन इन द ईयर ऑफ द 2000, there is a robot name is the Asimo, which is stand for the advanced step in innovative mobility. Advanced step in innovative mobility. Okay, Asimo. So this is Asimo robot is actually created by Honda Motors है ना. ठीक है, the Honda, and currently this is displayed in the Miraikan Museum in the Tokyo, Japan. Okay, तो ये किस चीज़ के लिए? by created by the Honda, the company of the Japan. Okay, and what are the purpose, or you can say the capability of this? Actually, the Asimo has the ability to recognize the moving object. ठीक है, moving object, posture, gesture, its surrounding environment, sound and faces. ठीक है, which enables it to interact with the human being. So this is considered, this Asimo is a type of the humanoid robot. ये कैसा था? कैसा है? ह्यूमनाइड रोबोट. ठीक है, और किसी एक म्यूजियम में इस समय काम इन द वर्किंग. दिस इज एक्चुअली डिस्प्लेड इन अ म्यूजियम. ओके, मिराइकन म्यूजियम समथिंग. ओके, इन द टोक्यो. एंड अगर इस पर हम बात करें तो व्हाट आर द एक्चुअली एडवांटेज ऑफ दिस Asimo robots? Actually, he can clean, do homework, buy groceries, and he cook for the family. Okay, तो आप कह सकते हो कि दिस इज अ काइंड ऑफ द डोमेस्टिक रोबोट. ओके, डोमेस्टिक रोबोट या डोमोबोट. ठीक है, तो इसका अब ऑब्वियस बात है कि अभी इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि अब खुद ही काम कर रहा है, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ द मेड, एनी काइंड ऑफ द शेफ और कुक. ओके, ये सारा का सारा ये खुद ही रिप्लेस कर दे रहा है सबको. ठीक, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इट कैन क्रिएट द व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, पावर सोर्स की वो इसको ज़रूरत होगी और बहुत सारे पैसे की भी ज़रूरत होगी, तो ये सारे इसके क्या हो सकते हैं? डिसएडवांटेज में कंसीडर किए जा सकते हैं. ठीक, तो बाय द ईयर ऑफ 2013,
in the year of 2013. Okay, there is the next robot. This is a Kirobo by the Japan. Okay, and the Kirobo is the first talking robot astronaut. जैसे हमने पहले बताया था, first talking robot astronaut. Clear? The first talking robot astronaut, and this is the Japan has sent it into the ISS. ठीक है, International Space Station. Okay, and the Atlas is here developed by the Boston Dynamics USA. ठीक है. Next one is the Atlas by Boston Dynamics. कहाँ? US से. क्लियर? तो अभी ऐसे बात करें ना, तो दिस इज द वर्ड, दिस इज द एक्चुअली इवोल्यूशंस इन द रोबोटिक्स. तो ऐसे रोबोटिक्स काम करते हैं, मतलब रोबोटिक्स का फील्ड ऐसा क्या इवोल्यूशन इसका इवॉल्व होते चला आया ये. ठीक है. एंड अब थोड़ा सा इंडिया के कुछ रोबोट्स के बात कर लेते हैं. इन इंडिया देयर इज़ अ रोबोट, ऐसा करो, इन इंडिया there is a robot name is the Manav. Okay, name is Manav. Manav is the India's first 3D printed humanoid robot. First 3D printed humanoid robot. Humanoid robot, and this inventor is the दिवाकर वैश. ठीक है, दिवाकर वैश. इन्वेंटर कौन है इसका? इज द इन्वेंटर दिवाकर वैश. ओके, तो एक्चुअली सेट रोबोटिक्स एंड द नेक्स्ट. अच्छा, ये मानव आया कब था? मानव इज एक्चुअली डेवलप्ड इन द 2014, the year of 2014. The next is the Rashmi in the year of the 2018. Clear? And this is a robot and realistic Indian humanoid robot. ठीक है, it's just look like a what human being and realistic humanoid robot. ठीक है, and invented by रंजीत श्रीवास्तव. रंजीत श्रीवास्तव. ओके, ही इज एक्चुअली प्रोग्रामर. ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रोग्रामर है, कंप्यूटर साइंस के टीचर भी हैं ये. कहाँ पे? केंद्रीय विद्यालय में. ठीक है. And the next, like the Shalu robot. Which one? Shalu robot. Clear? So Shalu robot is actually, this is considered the world first homemade artificially intelligent multilingual social and educational humanoid robot. देखो एक चीज समझो आप, this is a world first homemade. That means no any funds, no any grants is allowed by the government to the inventor. No any firm, no any companies are actually involving to develop for the development of the robot. ठीक है, ये क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट होममेड आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट. ठीक है, होममेड एआई मल्टी डायमेंशनल multilingual. That means he can understand
as well as he can speak in the several languages. ठीक है, multilingual, social and educational humanoid robot. The purpose is social purpose and the educational, social and educational humanoid robots. Humanoid robots. Okay, and this Shalu robot is actually designed by the Dinesh Patel, by दिनेश पटेल, बिहार के हैं दिनेश पटेल. अच्छा, ये रंजेश श्रीवास्तव इज़ अ प्रोग्रामर. ठीक है, ये कोई साइंस टीचर नहीं है, बट दिनेश पटेल इज़ अ वर्ड. दिनेश पटेल इज़ साइंस साइंस टीचर हैं. ये कहाँ के? केंद्रीय विद्यालय एंड द आईआईटी बॉम्बे. आईआईटी बॉम्बे. So he actually developed this Shalu robot by himself. Okay, so no any types of the aid or assistance is provided by the government or by the any industry. Okay, and he is actually developed this Shalu robot in the year of the 2020. ठीक है, in the year of 2020. Fine. The next one is the Lakshmi. Lakshmi is considered as the first banking robot. ठीक है. Lakshmi, the first banking robot. Okay, let's check out कि कहाँ पे ये इस समय वर्किंग में है. लक्ष्मी. हाँ, आप देख सकते हो, दिस इज द लक्ष्मी, इंडिया फर्स्ट बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च्ड. ठीक है, एंड कुंभकोणम बेस्ड सिटी यूनियन बैंक on Thursday launched India's first banking robot called the Lakshmi. ठीक है, and this is the artificial intelligence powered robot which will be the first on-site bank helper, can speak English, gesture and engage in a lifelike manner in the conversation. Okay, so in the year of the 2016 the Lakshmi is actually invented. ठीक है, तो 16 में इसका इन्वेंशन हुआ था, ये एक्चुअली डिज़ाइन किया गया था दिस रोबोट, और दिस इज कंसिडर द इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग रोबोट्स. ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी इमेज कुछ ऐसे देखने में. इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग. ओके, यू कैन सी दिस, न्यूज़ में भी खूब आया था ये. ठीक है, लक्ष्मी के बारे में, जो इसको कुंडन कोणम के किसी यूनियन बैंक में इसको क्या किया गया था. एन कामाकोडी एमडी एंड सीईओ सिटी यूनियन बैंक विद द बैंक लेटेस्ट एआई रोबोट. अच्छा, ये वहाँ के बैंक मैनेजर हैं. ठीक है, सीईओ हैं, एमडी सीईओ हैं. ठीक है, यूनियन बैंक के. क्लियर. तो दिस इज द लक्ष्मी रोबोट. फाइन. ओके, सो सम अनदर रोबोट्स आर आल्सो इन रेफरेंस ऑफ द इंडिया हैज़ गिवन, जो कि बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं. लाइक देयर आर द सम अनदर रोबोट लाइक द रोबोकॉप. ओके, मित्रा, केम्पा, इसका नाम दे देता हूँ, एक बार आप इसको ज़रूर देख लेना. ठीक है, लाइक द रोबोकॉप. ओके, मित्रा रोबो, केम्पा. ओके, केम्पा, लाइक द राडा, राडा, इंद्रो. ओके, राडा, इंद्रो. फाइन. एंड इरा, इरा. ओके, these are some Indian robots. ठीक है, and this is designed and developed in the India. एक नाम और रोबोट्स में आता है, like the name is the Sophia. Okay, the Sophia. Sophia is considered as the what? This is actually the Sophia robots is developed in the year of the 2016 by the USA. ठीक है, तो
USA, the Hanson Robotics actually responsible for the what the development, or you can say design of this Sophia robot. And in the year of the October 2017, in October 2017, actually the Saudi Arabia has given the what citizenship of the citizenship to the Sophia. So Sophia adopted the citizenship of Saudi Arabia. Saudi Arabia. ओके, तो वहाँ पे उसको क्या मिला, एक सिटीजनशिप मिला सऊदी अरब का, ठीक, एंड बिकम द फर्स्ट रोबोट टू रिसीव द सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री, ठीक है. तो इन बाय द ईयर ऑफ 2017, ठीक है, द सोफिया हैज़ बिकम द फर्स्ट रोबोट टू रिसीव द सिटीजनशिप, ठीक है, ऑफ एनी कंट्री. तो दिस इज ऑल अबाउट आवर रोबोटिक्स, ठीक. टुमारो, you can say in the next class, we will discuss about the what, about the IPR. Okay, the remaining topics, or you can say the last topic of the science and technology, we will discuss the IPR. IPR is here stand for the intellectual property rights. ओके, इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, इसमें हम ट्रेडमार्क के बारे में बात करेंगे. ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, क्लियर. So we have to discuss about all the things, and what are the organizational setup, which you can say what are the organization, or what are the some conventions, some rules and regulations which are actually responsible for प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके, जीआई टैग वगैरह के बारे में भी इसमें हम बात करेंगे, ट्रेडमार्क के बारे में बात करेंगे, फाइन. तो दीज आर कंसिडर एज द व्हाट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. So for the today's session, the robotics is completed. Okay, and we will continue with the intellectual property rights in our next session. So thank you so much, and be careful. Okay, and stay safe. Thank you so much, and Jai Hind.